Hi everyone, welcome back to my channel Osteopathy Clinic. So here again we have Mr. Tripathi. इनका भी आज थर्ड सेशन है, तो ऑलरेडी 2 सेशन ले चुके हैं. आज आए हैं थर्ड सेशन के लिए. तो पहले से बेटर है, बट थोड़ा सा और मोबिलिटी और सैक्रोलियल जॉइंट में उनका थोड़ा सा पेन और थोड़ा स्टिफनेस है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है. तो देख लेते हैं, आज शुरू करते हैं हम लोग थर्ड सेशन. तो देखते रहिए. थैंक यू. थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. एक काम कीजिए, आप पेट के ऊपर लेट जाइए. पेट के ऊपर लेट जाइए पहले आपका. फिर लिम लेंथ क्या है, कम और छोटा है, यहाँ पे हाथ रखिए. हाँ, कीप माय हैंड्स हियर. आर यू कंफर्टेबल? ओके, लेट मी चेक योर लिम लेंथ अगेन. जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. या राइट थोड़ा सा शॉर्ट है. Okay, we'll check again. Just relax. थोड़ा सा बेटर हुआ. ओके, बताइए पेन यहाँ पे है, दिस एरिया? नो, यहाँ पे, यहाँ से जस्ट इन द सेंटर यू आर पेन. यहाँ से ओके, so both the sides you don't have pain here. साइड में यहाँ पे भी हाँ. होता यहाँ पे भी है. Okay, so you don't have pain in your lumbar, is L4, L5, but you have basically in sacroiliac joint. You know, this is sacroiliac joint. तो यहाँ पे आपको दर्द है, और ये gluteus medius और maximus. यहाँ पे पेन है क्या आपको? राइट साइड में? हाँ, राइट साइड में थोड़ा सा. ओके, ठीक है. लंबी सांस लें, नाक से सांस लें, मुंह से छोड़िए. अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. पफ हुआ. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. एक बार और. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ओके, आप एक बार इसमें टर्न कर लीजिए. टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट. ओके, हाँ, हाथ यहाँ रखें. थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे आइए. हाँ, और नीचे थोड़ा सा नीचे आइए. हाँ, ओके. हाथ को क्रॉस कीजिए, फिंगर क्रॉस कीजिए. या टर्न ऑन द अपोजिट साइड. सामने आ जाइए. और हाँ, बैक स्ट्रेट करें. स्ट्रेट, नॉट बोथ द लेग्स, only legs. Yeah. Just relax. This is iliac, forearm posterior. Breathing, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. How was that? It was good, Paul? Excellent. Be on the other side. Straight. No, don't go. सामने आइए, सामने. हाँ, हेड ऑन अपोजिट साइड. या और सामने आ जाए. ये पैर स्ट्रेट रखें. हाँ, जस्ट रिलैक्स. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. एक बार और.
सिर्फ काफी आवाज हुआ है। वो खुल गया, जो एडिशंस था वो ब्लॉकेज वो निकल गया। फैंटास्टिक। ओके, फिक्स या वापस पेट के ऊपर लेट जाए। स्टॉप। फॉर योर पेल्विस। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, this is for your thoracic. Breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Okay. Breathe in, breathe out. लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Okay. Breathe in, breathe out. 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 ये है आपका डिस्ट्रैक्शन ऑफ पेल्विस। हाँ, पेल्विस का हम डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक बार और, रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वेरी गुड पॉम। आपने सुना? वेरी गुड। ये पैर सीधा के रखें, सीधा कीजिए लेफ्ट वन। या ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक्सेलेंट। ब्रीथ आउट। This is for tibiofibular joint. Breathe in, breathe out. Okay. ये बार चेक करके फिर देखते हैं आपका लिम्ब लेंथ। देखिए, मच बेटर। वेरी गुड। ओके, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। दोनों घुटने मोड़, पैर सीधा रखिए। दिस इज फॉर योर सैक्रल न्यूट्रिशन। ओके, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सर में निकल गया, नहीं है एकदम स्टिफनेस। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
breathe in, breathe out. Yeah, relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Yeah. Very good. Excellent. Breathe in, breathe out. स्टार्ट करो Okay. Just relax. मेरा ऊपर थोड़ा लीन हो जाएंगे. Just relax. Okay. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Movements. It's better now. Good. Up. ऊपर देखें. नीचे. Fine. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ये रखिए ऐसा. Breathe in, breathe out. हाथ कैसे रखिए straight. ऐसा हाँ. Breathe in, breathe out. 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 Chiropractic गन है, इससे थोड़ा सा आपको स्टिफनेस और फैसिटल जॉइंट इसको थोड़ा सा रिलीज करेंगे. एडजस्टमेंट हुआ इससे. ओके. ये सैक्रोइड जॉइंट के लिए करेंगे हम. ऊपर जा रहे हैं लंबर एरिया में. L4, L5. सर बोलिए अभी आज थर्ड सेशन के बाद आपको कैसा लगा है? ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट. सी बेसिकली जैसे मैंने आपको डे 1 में बताया था, बेसिकली 3 to 4 सेशन लगता है, बट मोर इम्पोर्टेंट इज अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर एज. यू नो हाउ लॉन्ग इज योर पेन एंड हाउ लॉन्ग यू हैव डन योर एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड यू हैव टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ. जो आपका 30 साल का जो प्रॉब्लम था वो अभी तो काफी बेटर है उससे. जैसे आप 1 से 10 का आप पहले भी लास्ट सेशन में बताए थे कि इट इज अराउंड 9. आज कितना देंगे आप? आज से एक से 10 के अंदर देखिए, वैसे अगर पूछे तो मैं अभी जिस कंडीशन में आया था, हाँ हाँ, वापस से वो पुराना चीज रिवाइव कर रहा था. उससे अभी जो पोजीशन जो है
इसमें मैं फिर वापस भेज दूंगा, नहीं ना भी बेटर फील कर रहे हैं। बेटर फील कर। क्या होता है सर, एक्चुअली जैसे आपको बता रहा था, स्पाइन का मैल अलाइनमेंट की वजह से एक ग्रुप ऑफ मसल खिंचता है और फिर पेल्विस का भी लेवल भी जो है वो ऊपर नीचे रहता है। और करूंगा हाँ, जो उससे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। आप लेट के जितना प्रेस करेंगे तो वो क्या है, जो आपको थोड़ा लिसिसिस है तो वो प्रेशर देने से क्या होगा, सैक्रम ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि वो पीछे हो रखा है और एंटीरियर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो रखा है। तो मोर यू डू दिस, तो मोर यू गेट बेटर। और एक क्या है ना, चेयर आप ऐसे कमर को 90 डिग्री करके ऐसे आप पैर को उठा के 15-20 मिनट आपको ऐसे रखना है, तो उसमें ये पोस्चर जो उसमें काफी आराम मिलेगा। वो जो एक्सरसाइज स्टार्ट प्रैक्टिस हाई को जो पुश कर रहा था ऊपर एकदम करके। स्ट्रेट बैक के ऊपर लेट के हाँ, समझ यू गया कीप मैं। योर चेयर हाँ। एंड पैर को उठा के जस्ट सीधा रखते हैं और कुछ नहीं करना। और बस वो, और कुछ नहीं करना आपको। उसमें आपको वो पोजीशन जो है उसको आपको मेंटेन करना है 20 से 25 मिनट तक। यू हैव टू कीप दिस, मेंटेन दिस पोजीशन। अच्छा, वैसे ही हाँ, उससे काफी ज्यादा जो टेंशन है वो रिलीज हो रहा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो करके मैं तो थाई को पुश करता था, काफी रिलीफ हुआ उससे। बस बस बिल्कुल। तो अभी जो एज एक्सरसाइज मैंने आपको बताया वो दिन में 2 बार करके करें। कीप योर पोस्चर इन अ वेरी गुड पोजीशन, ट्राई टू मेंटेन इट एंड एर्गोनॉमिक्स। ऊंची चेयर में बैठे, ऊंची बेड में बैठे, यू नो ऊंची सोफा में बैठे, सो दैट आपका पोस्चर जो है प्रेशर ना आए लंबोसैक्रल जंक्शन में, सो दैट एवरीथिंग गोज। ठीक है? राइट सर।